नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी चैप्टर 1 से। फिर आगे की भी 2 वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें कि चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे। तो आप चैनल पे ज़रूर आइए और क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस को। दोस्तों, आप ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट पहला ले लेते हैं। सेलेक्ट द रिसेप्टर दैट इज़ लोकेटेड इंट्रासेलुलरली। ऑप्शन ए ओपियोइड अल्फा रिसेप्टर्स, बी स्टेरॉइड रिसेप्टर्स, सी प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, डी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। दोस्तों, मैं आज आंसर थोड़ा जल्दी बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं और ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी बताऊंगी। तो आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस को समझने की जल्दी कोशिश करिएगा। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेरॉइड रिसेप्टर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एगोनिस्ट इंड्यूस ऑटोफॉस्फोराइलेशन, इंट्रालाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ए जी प्रोटीन coupled receptors, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक आयन चैनल containing receptors, ऑप्शन सी टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स, ऑप्शन डी रिसेप्टर्स रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स, ऑप्शन सी टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब सर्व एज इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स इन रिसेप्टर मेडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्सेप्ट, ऑप्शन ए साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन बी इनोसिटोल ट्राइसफॉस्फेट, ऑप्शन सी डाइसग्लाइसेरोल, ऑप्शन डी जी प्रोटीन। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जी प्रोटीन्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसेप्टर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म्स विद द फास्टेस्ट टाइम कोर्स ऑफ रेस्पॉन्स इफेक्चुएशन इज, ऑप्शन ए एनिलाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी पाथवे, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपेज CIP3 DAG पाथवे, और ऑप्शन 3 इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन, ऑप्शन डी प्रोटीन सिंथेसिस मॉड्यूलेशन। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑपरेशन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ रिसेप्टर विच इटसेल्फ हैज़ एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी इज, ऑप्शन ए इंसुलिन रिसेप्टर, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ऑप्शन सी थायरोक्सिन रिसेप्टर, ऑप्शन डी ग्लूकागोन रिसेप्टर। कौन सा ऐसा रिसेप्टर है दोस्तों जिसका अपना खुद का एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ है? ऑप्शन ए इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर का अपना खुद का एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
Down regulation of receptors can occur as a consequence of. Down regulations of receptors can occur as a consequence of option A, continuous use of agonist, option B, continuous use of an antagonist, option 3, chronic use of CNS depressant, D, denervation, ऑप्शन डी डेनेवर्सन। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? कौन सा रिसेप्टर कॉन्सिक्वेंसेस का है? ऑप्शन ए, continuous use of agonist. Continuous use of agonist receptors can occur as a consequence. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। The following statement is not true of log dose response curve. Which statement is not true of log dose response curve? Option A, it is almost linear except at the end. Option B, it is a rectangular hyperbola. Option C, it facilitates comparisons of different agonists. Option D, it can help in discriminating between competitive and non-competitive antagonists. तो बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें सही लॉग डोज रेस्पॉन्स नहीं है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन बी, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सही आंसर है आपका। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। When therapeutic effect decline both below and above a narrow range of doses, a drug is said to exhibit option A, ceiling effect, B, desensitization, option 3, therapeutic window phenomenon, option D, no receptor mediated action. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन। थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एग्जिबिट्स थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एग्जिबिट्स थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? ऑप्शन ए, कैप्टोप्रिल, ऑप्शन बी, फ्यूसेमाइड, ऑप्शन डी, डियाजेपम, ऑप्शन डी, इमिप्रामाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इमिप्रामाइन। The following statement is not true of potency of a drug. The following statement is not true of potency of a drug. Option A refers to the dose of the drug needed to produce a certain degree of response. Option B can be related to that of its congeners by the relative position of its dose response curve on the dose axis. Option C, it is often not a major consideration in the choice of a drug. Option D, it reflects the capacity of the drug to produce a drastic response. ऑप्शन देख लियो बच्चों।
क्वेश्चंस अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों, आंसर खुद ब खुद सही आएंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इट रिफ्लेक्ट्स द कैपेसिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस अ ड्रास्टिक रेस्पॉन्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग एफिकेसी रिफर्स टू। ऑप्शन ए, द रेंज ऑफ डिजीज इन विच द ड्रग इज बेनिफिशियल। ऑप्शन बी, द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रेस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। Option C, the dose of the drug needed to produce half maximal effect. Option D, the dose of the drug needed to produce therapeutic effect. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रेस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ऑप्शन ए, अ मोर पोटेंट ड्रग इज मोर efficacious. Option B, a more potent drug is safer. Option C, a more potent drug is clinically superior. Or option D, a more potent drug can produce the same response at lower dose. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अ मोर पोटेंट ड्रग कैन प्रोड्यूस द सेम रेस्पॉन्स एट लोअर डोजेज। 25, हायर एफिकेसी ऑफ अ ड्रग नेसेसरली कॉन्फर्स। ऑप्शन ए, ग्रेटर सेफ्टी। ऑप्शन बी, थेराप्यूटिक सुपेरियरिटी। ऑप्शन सी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रेस्पॉन्स। ऑप्शन डी, कॉस्ट सेविंग। इनमें से सही आंसर सोचिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रेस्पॉन्स। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंटेंस रेस्पॉन्स। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ द डोज रेस्पॉन्स कर्व्स ऑफ अ ड्रग फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्शंस आर वाइडली सेपरेटेड ऑन द डोज एक्सिस द ड्रग इज। ऑप्शन ए, हाईली पोटेंट। ऑप्शन बी, हाईली इफिकेशियस। ऑप्शन सी, हाईली टॉक्सिक। ऑप्शन डी, हाईली सिलेक्टिव। ऑप्शन डी, हाईली सिलेक्टिव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज अ मेजर ऑफ इट्स। ऑप्शन ए, सेफ्टी। ऑप्शन बी, पोटेंसी। ऑप्शन सी, इफिकेसी। ऑप्शन डी, डोज वेरिएबिलिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेफ्टी।
Compared to the drug named within parasynthesis, which of the following drug has a higher potency but lower efficacy? Option A, pethidine in bracket morphine. Option B, furosemide hydrochlorothiazide. Option D, diazepam pentobarbital. Option D, enalapril in bracket captopril. इसका सही ऑप्शन है डायाजेपम पेंटोबार्बिटोन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स, द टू ड्रग्स आर एग्जिबिटिंग। ऑप्शन ए, पोटेंशिएशन। ऑप्शन बी, साइनर्जिज। ऑप्शन सी, क्रॉस टॉलरेंस। ऑप्शन डी, एंटागोनिज्म। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, साइनर्जिज। साइनर्जिज, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द एंटागोनिज्म बिटवीन एड्रेनालिन एंड हिस्टामाइन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म बिकॉज ऑप्शन ए, बोथ आर फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट इन द बॉडी। Option B, they act on physiological receptors. Option C, both affect many physiological processes. Option D, they have opposite physiological effect. Sorry. सॉरी दोस्तों, बहुत आगे आ गया। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, द एंटागोनिज्म बिटवीन एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म बिकॉज ए, बोथ आर फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट इन द बॉडी। बी, दे एक्ट ऑन फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स। सी, बोथ इफेक्ट मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। डी, दे हैव ऑपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दे हैव अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। द एंटीडोटल एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इज कैनाइड पॉइजनिंग इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए, फिजिकल एंटागोनिज्म। बी, केमिकल एंटागोनिज्म। ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ऑप्शन डी, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म।
दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. अ ड्रग आर प्रोड्यूसिंग नो रिस्पॉन्स बाय इटसेल्फ कॉजेज द लॉग डोज रिस्पॉन्स curve of another drug as to shift to the right in a parallel manner without decreasing the maximal response. Drug R is a option A partial antagonist, B inverse agonist, option partial agonist, option B inverse agonist, option C competitive antagonist, option D non competitive antagonist. Which is the right option? Option C competitive antagonist. Competitive antagonist. A drug which does not produce any action by itself but decreases the slope of the low dose response curve and suppresses the maximal response to another drug is a option A physiological antagonist, B competitive antagonist, option C non competitive antagonist, option D partial antagonist, option D partial agonist. तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. ऑप्शन ए केमिकल रिजेम्बलेंस विद द एगोनिस्ट, बी पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एगोनिस्ट लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व, option C suppression of maximal agonist response, option D apparent reduction in agonist affinity for the receptor. तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी सप्रेशन ऑफ मैक्सिमल एगोनिस्ट रिस्पॉन्स. सप्रेशन ऑफ मैक्सिमल एगोनिस्ट रिस्पॉन्स. द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट ऑफ GABA but not a competitive agonist of diazepam. Option A picrotoxin, option B mucimol, option C flumazenil, option D biculine. बिकुकलाइन कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बिकुकलाइन. ऑप्शन डी बिकुकलाइन. The dose of the following class of drug has to be adjusted by repeated measurement of the affected physiological parameter. Option A oral contraceptives, option B antiepileptics, option C antidepressants, or option D oral anticoagulants. सही आंसर है ऑप्शन डी ओरल एंटीकोगुलेंट्स. नेक्स्ट अ ड्रग विच इज जनरली एडमिनिस्टर्ड इन स्टैंडर्ड डोजेस विदाउट द नीड फॉर डोज इंडिविजुअलाइजेशंस इज. ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी मेबेंडाजोल, ऑप्शन सी प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन डी डायगोक्सिन. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेबेंडाजोल.
Which is next question, which of the following statement is not true of fixed dose combination formulations? Option A, they are more convenient. Option B, contraindications to one of the components doses not contraindicated the formulation. Option C, the dose of any one component cannot be independently adjusted. Option D, the time course of action of the different components may not be identical. तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, contraindications to one of the components does not contraindicated the formulation. Option B. Next, fixed doses combination formulations are not necessarily appropriate for. Option A, drug administered to standard doses. Option B, drugs acting by the same mechanism. Option C, antitubercular drugs. Option D, antihypertensive drugs. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ड्रग्स एक्टिंग बाय द सेम मैकेनिज्म. Drugs acting by the same mechanism. Last question, a fixed dose combinations preparations mean for internal use must not contain the following classes of drug. Option A, thiazide diuretics. B, fluoroquinolone antimicrobial. Option C, corticosteroid. Option D, H2 blocker. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ऑप्शन सी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड. नेक्स्ट, inter-individual variations in equi-effective doses of a drug are most marked if it is disposed by A, glomerular filtration. Option B, tubular secretion. Option C, both glomerular filtration and tubular secretion. Option D, hepatic metabolism. hepatic metabolisms. कौन सा आंसर सही है दोस्तों? आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए. इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन equi-effective doses of a drugs are most marked if it is disposed by. तो ऑप्शन डी राइट है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म्स. डिस्पोज्ड बाय हेपेटिक मेटाबॉलिज्म्स. नेक्स्ट, द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स इन द neonate differ from that in adults because their option A, intestinal transit is fast. B, drug metabolizing enzymes are overactive. C, tubercular transport mechanisms are not well developed. Option D, glomerular filtration rate is high. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. नेक्स्ट, which adverse drug effect is more common in children than in adults? Which drug effects? Option A, isoniazid induced neuropathy. B, chlorpromazine induced muscle dystonia. C, digoxin induced cardiac arrhythmia. Option D, penicillin hypersensitivity.
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोप्रोमाजाइन इंड्यूस्ड मसल्स डिस्टोनिया। क्लोरोप्रोमाजाइन इंड्यूस्ड मसल डिस्टोनिया इफेक्ट more common in children than in adults. Next, the elderly patients are relatively intolerant to. The elderly patients are relatively intolerant to option in digoxin, option in salbutamol, options in propranolol, option D nifedipine. The elderly patients are relatively intolerant to option A digoxin. Next, the following drug adverse effect is especially noted in man compared to woman. Option A tardive dyskinesia due to neuroleptics. B levodopa induced abnormal movements. Option C ampicillin induced loose motions. Option D ketoconazole induced loss of libido. तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कीटोकोनाजोल इंड्यूस्ड लॉस ऑफ लिबिडो। कीटोकोनाजोल इंड्यूस्ड लॉस ऑफ लिबिडो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल मैं फिर इसी चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी क्लास में। तो आप क्लास को ज्वाइन करिए और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है, जिन क्वेश्चंस में आपको एफर्ट डालने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में नोट कर लें और फिर उसे अच्छे से याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।